ओके बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट दीज आर द पॉइंट्स। ओके, एक्चुअली दीज आर 3 questions merged in a one question. So first we will find the value of this polynomial at x equal to 0. What we have to do, हमें x की वैल्यू 0 को इस पोलिनोमियल में पुट करना है। जहाँ जहाँ पे आपको x दिखेगा वहाँ पे हम x की वैल्यू 0 डाल देंगे। So let us see the first part. 5 in place of x we will put 0, then 4 and x square, x is 0 again, then plus 3. Okay, so in this polynomial we put x equal to 0 at all the places. So 5 into 0 0, then minus, and we know that 0 square is 0, 0 into 4 0, plus 3. So this is 3. So value of this polynomial at x equal to 0 is 3, right? Similarly, see the second part at x equal to minus 1. So put x is equal to minus 1 at this polynomial. So 5 into x is minus 1, then 4, then again x is minus 1, then 3. Okay, so see 5 into minus 1, that is minus 5, then minus 1 is square, that is minus 1 into minus 1 will become 1. So 1 into 4, 4 with minus sign, then plus 3. So this is nothing but minus 9 plus 3, that is minus 6. Okay, similarly you can do for the third part. Okay, so you will try yourself, right? X is equal to 2 you have to put here and see what is the total value of this polynomial. Okay, so in this way we can do this question. Okay, second question is find p0, p1, p2 for each of the following polynomials. So there are 4 parts, 1, 2 and 2 more. Now you have to find what is p0. So see here, this is polynomial of the variable y and we have to find p0. That means we have to substitute y with वैल्यू 0. जहाँ पे y दिख रहा है उसकी जगह हमें 0 कर देना ताकि we will get p0. That means the value of this polynomial at y equal to 0, right? So let us do the first one. Py is equal to y square minus y plus 1. This is our question. We have to find p0. So instead of y we put 0. इस y की जगह 0 डालना है. So this is 0 minus again 0 plus 1. So that is 0 minus 0 plus 1, that is equal to 1. Okay, so this is the value of polynomial py at y equal to 0. Similarly we can find p1 for the same problem. So instead of y here we are getting 1, so 1 we will put here. So now here instead of y 1 minus y1 plus 1. So this is 1 square means 1 minus 1 plus 1, this cancelled, so this is again 1. So the value of polynomial py is also 1 at y is equal to 1. Similarly we have to find p2. That means instead of y we will put 2. So here y is replaced by 2, again y is replaced by 2 plus 1. So 2 to the 4 minus 2 plus 1, that is 4 minus 2 2, 2 plus 1 3. Okay, so this is the value of py at y is equal to 2. So if you want you can say this is a part, this is b part and this is c part, right? So in this way we can do this question. There is another question also, this one, right? So we can also solve this question. Here pt is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. This is cube, right? So instead of t, this is the variable and these are also variable. So यहाँ पे y जैसे था वहाँ पे t है. Variable is changed but we have to find the value of pt at the same points 0, 1 and 2 for all the question. जितने भी पार्ट क्वेश्चन के दिए हैं सब में आपको वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 और 2 ही रखना है. So first we will find what is p0. That means instead of t we are putting 0. Now this is 2 and this is plus
instead of t we will put 0 plus 2, and instead of t again 0 square minus t is 0, so 0 cube. Now this is 2 plus 0, this will also be 0, and this is also 0, that is 2. So p0 is equal to 2, right? Similarly we can find p1. Instead of t we can put 1. So suppose p1, so 2 plus t is equal to 1 plus 2 t is equal to 1 square minus 1 square cube, sorry. So this is 2 plus 1, 1 square is 1, 1 into 2 2 minus 1. So minus 1 when plus 1 is cancelled, 2 plus 2 that is 4. Okay, so this is 4. Similarly we can find for p2. Instead of t we will put 2 here, all places of t we will put 2. So in that way you can also find out p2. okay, तो ये समझ में आया कैसे क्वेश्चंस करने हैं. ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. ये जो वैल्यूज हैं x इज इक्वल टू -1/3 है यहाँ पे, क्या ये इसका ज़ीरो है या नहीं है. सो हमने पहले पढ़ा था कि ज़ीरो क्या होते हैं. ज़ीरोज आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच व्हेन पुट इन द पॉलिनोमियल इट्स वैल्यू गेट्स ज़ीरो. अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें डाल दूँ, इस पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x दिख रहा है उसकी जगह ये वैल्यू डाल दूँ और ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो ये इसका ज़ीरो होगा. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती तो ये इसका ज़ीरो नहीं होगा. वापस मैं समझाता हूँ कि अगर मैं इस वैल्यू को, जो इसका वेरिएबल है वो जो दिया हुआ है, उसको मैं इस पॉलिनोमियल में डालता हूँ उस वैल्यू के प्लेस, वेरिएबल के प्लेस में, तो अगर इसकी टोटल वैल्यू ज़ीरो आती है तो ये इसका ज़ीरो होगा, ये वैल्यू इसके ज़ीरो होगी. अगर ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आती तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है. राइट, तो हम क्या करते हैं, p और x की जगह -1/3 डालते हैं, इधर भी लिखेंगे और इधर तो पुट करना ही हमें. सो 3 इंटू -1/3 प्लस 1. राइट, नाउ यू कैन सी 3 कैंसल्ड, सो दिस इज -1 प्लस 1, टोटल इज 0. सो क्योंकि यहाँ पे देखिए यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गोज टू 0 व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू -1/3. सो व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गोज टू 0, दैट मीन्स दिस value of x is the 0 of the given polynomial. Okay, so you can write x is equal to -1/3 is the 0 of polynomial 3x plus 1. Right, similarly we have a second question, second part of this, that is px is given by 5x minus pi. Right, and the value of x is given 4/5. Now we will substitute this value of x in this polynomial and see what happens. So 5 instead of x we will put 4/5 minus pi. Right, now you can say 5 cancel with 5, so that is 4 minus pi. Now this 4 minus pi is not 0 because we know that pi is irrational number and this is fixed irrational number. If we subtract this we will not get rational number or we will not get 0 also. Okay, so this is non-zero. As it is non-zero, so we can say this value is not the 0 of this polynomial. Right, so we will write here, we can write here x is equal to 4/5 is not 0 of px is equal to 5x minus pi. Right, so in this way we can do other question of other part of this question. ठीक है, in all you have to put these given values in the polynomial. If the total comes 0 then that value will be the 0 of the given polynomial. If total doesn't come 0, that means जैसे इस केस में था यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, so that means that given value is not the 0 of the given polynomial. Right, okay, now see the question number 4 of this exercise. Find the zeros of the polynomial
and there are many parts. I have taken these 4 parts. Let us do the first part. Px is equal to x plus 5. Now means we have to find the value of x at which this polynomial goes to 0, because we know zeros are the values of variable at which the polynomial goes to 0. हमें x की वो वैल्यू निकालनी जिसमें ये पूरा 0 हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू बोलूँ तो अगर आप वैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे सीधा x इज इक्वल टू -5 कर दूँ तो -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो -5 है जिस पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाता है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। बट उसको हम किस तरह करेंगे, इस तरह हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि 0 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पोलिनोमियल गोज टू 0। दैट मीन्स दिस px गोज टू 0, हम इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 5 इधर जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू x, और वी कैन से x इज इक्वल टू -5। सो दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। इसी तरह सपोज मैं ये सेकेंड वाला लेता हूँ, px इज इक्वल टू x माइनस 5। अगेन दिस वैल्यू गोज टू 0, सो x माइनस 5 दिस विल कम दिस साइड, सो 5 इज इक्वल टू x और x is equal to 5. This is the 0 of this polynomial. Similarly, see this the third part. Px is equal to 3x minus 2. This will be 0. So 3x minus 2. 2 इधर आ जाएगा. 2 is equal to 3x और 3 भी नीचे चला जाएगा. So x is equal to 2/3. ये इधर आ जाएगा. Similarly, see the fourth one. Px is equal to cx plus d, and where c is not equal to d. Then see here, let this is 0, so cx plus d. Now d will come this side, so minus d is equal to cx or x is equal to minus d upon c, right? So in this way we can do these questions, right? So these are the zeros of the given polynomials.